Hey guys, good evening everyone. I hope all of you are doing great. Is this a good time to start? Shall we? Yes, sir. Great, great. So let's start the discussion कि markets में चल क्या रहा है exactly and what we can expect in the next 24 to 48 hours, right? So the first thing here is अगर आपको दिख रहा है on my screen, I have the chart of Bitcoin open, right? So on the 2 hours time frame of Bitcoin, right? What can be seen here is the markets formed a bottom and then it did try for a recovery since the morning, right? It was a very straight kind of a recovery, right, without any major pullback, right? ये पूरा recovery हमें मिला. And then right after the US markets opened, there was a very aggressive short selling that happened in the market, right? So ये जो aggressive short selling है अभी चल रहा है, this is currently going on. So if you open the 5 minutes time frame also, you can clearly see कि यहाँ से fall start हुआ and then there was a recovery and then from here again the fall started, right? So obviously the bears are a little strong. They have utilized this upward retracement as an opportunity to enter, right? Opportunity to short the markets. तो थोड़ा बहुत bearish दिख रहा है हमें. If you look at the altcoins also, so the altcoins are also looking quite bearish. ठीक है, everything is looking decently bearish, right? आप सोलाना देख लो, सोलाना is trading at 184, which is of course at a massive discount, right? So this is the thing guys, like obviously थोड़ा बहुत हमारा retracement दिख रहा है markets में. So what we can expect is, right, अगर यहाँ से हम आगे का predictions करें, so this last low happens to be a very crucial zone, right? 91,000 के आसपास जो area है, this can again get retested. ठीक है, this is the area that can get tested and then from here either the market will break it down or it will consolidate here. ठीक है, सीधा सीधा ऊपर तो आएगा नहीं because it is a little bearish here. For the first time the market tested the 90,800 zone. This is the second time, this is the third time, and this is the fourth time, and now we are heading for the fifth time. ठीक है, so थोड़ा सा risky है चीजें, right? So especially those who are holding alts, that too with leverage, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ये market because everything is just falling, everything is bearish. Now the major question here is कि अगर ये support break हो जाए, if this area gets broken down, right, तो फिर market कहाँ तक आ सकती है? So for that, what we will do is we'll use the Fibonacci retracement from this point जहाँ से rally start हुआ था. So you can clearly see कि 0.382 के आसपास मार्केट इज होल्डिंग अप, राइट? अगर मैं रैली के बॉटम से रैली के टॉप तक ले जाऊं, so 0.382 is the area where the market has been able to hold up to. Now from here अगर ये ब्रेक हो जाती है, then the next target, then the next major support will be around the mark of the 0.5 retracement zone, right? So if you are talking about this golden zone, तो गोल्डन जोन के हिसाब से हमारा 0.5 एंड 0.618 के बीच में मार्केट बॉटम हो सकता है, which is between 83,000 and 87,000, right? So 83K to 87K. This could be the potential zone of reversal for the Bitcoin price. Okay, अगर यहाँ से 382 ब्रेक हो जाता है, अगर यहाँ से दिस एरिया ऑफ 91,000 लेवल गेट्स ब्रोकन डाउन, 90,000 ब्रेक हो जाता है, फिर वहां से it can come down till 83,000 to 87,000 के बीच में कोई level, which is the golden zone, and from there on we can probably observe some sort of a upward movement. ठीक है, so this is an analysis done based on the Fibonacci as well as the current market जो थोड़ा सा bearish है. Okay, so as per the Fibonacci what we believe is 0.382 is the first support जहां पे आके मार्केट रुकता है, बट द मूवमेंट, द बाउंस फ्रॉम 0.382 is strong, right?
यहाँ से the bounce will be stronger. But if the market comes down to 0.5 and 0.618, फिर वहां से the bounce will not be as strong as compared to 0.382, because वो golden zone कहलाता है, and the market usually will be sideways here, फिर यहाँ से घूम के ऊपर जाएगा. ठीक है. So that is my expectation if someone asks कि up to what level can Bitcoin come down, right? So this would be the answer कि it can come down till 83,000 to 87,000. All right. Now, I'd like to hear your suggestions, guys. What's your feedback? What's your take on this analysis? What do you think will happen in the markets? Anyone? Can you get started? So where are the folks? Yes, Rushabh. आपका एनालिसिस परफेक्ट है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को एक्चुअली मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो Hmm. यस, लिक्विडिटी अगर हम देखते हैं तो 87 के 90 के वुड बी अ वेरी क्रूशियल जोन, जहां पे हमको देखना पड़ेगा व्हाट इज द रिएक्शन फ्रॉम बायर साइड। अगर वो नहीं रहता है सफिशिएंट इनफ तो 87 के वुड बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। Hmm. उसके नीचे तो फ्री फॉल है, मतलब बेसिकली लिक्विडिटी बहुत कम है। देन 82 83 लुक्स लाइक, फिर वो तो बहुत बात की बात है। लेट्स सी 90 और 87 पे कैसा रिएक्शन आता है। Hmm. एंड अगर आप रिट्रेसमेंट का एक रूल होता है कि 3 वेज में रिट्रेसमेंट होता है तो देन इट्स बुलिश साइन, एंड अगर 5 वेज में होता है तो इट बिकम्स बेरिश, मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी तो 3 वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से 87 के लुक्स वेरी प्लॉसिबल एरिया जहाँ पे मार्केट रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकता है। Hmm. तो यस, लेट्स सी, मतलब इन कमिंग आवर्स, बिकॉज एसएनपी और बाकी सब जो मार्केट्स है ना उनके, तो 1.7% डाउन दिख रहा है एसएनपी। तो आई फील कि यूएस मार्केट्स का प्रेशर थोड़े टाइम में आ जाएगा अपने इस मार्केट पे भी। Hmm. यस, लेट्स सी, मतलब कमिंग आवर्स आर थोड़ा क्रूशियल। ये वीकेंड एक्चुअली थोड़ा सा रहेगा रिस्कियर साइड में। देन Hmm. प्रोबेबली मंडे ऑनवर्ड्स वी कैन सी अ परफेक्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स, मतलब क्या होता है कैसे। Hmm. So, as per, you rightly pointed out कि US markets are very bearish. Nasdaq is down by 1.4% today. This is the problem that is, bringing the markets down. This is a fall that is majorly led by US market. तो यही एक कंसर्न है गाइस, वी वर सेइंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम कि यूएस मार्केट्स एक बार अगर गिरने लगे, स्पेसिफिकली नैस्डैक, तो क्रिप्टो थोड़ा सा वीक तो हो जाती है। एंड क्लियरली सी S&P 500 भी एक सर ब्रेकआउट। हेलो। हाँ, बताओ हेलो बताओ आप। हाँ। सर, ये क्या स्टॉक मार्केट और जो हमारा क्रिप्टो करेंसी वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है क्या? हाँ, कह सकते हो आप। हम्म। क्योंकि मैंने मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, तो अभी मेरा गोल्ड का जो है वो बढ़ रहा है अभी। हाँ। तो क्या नेगेटिवली कोरिलेटेड है क्या गोल्ड और क्रिप्टो? देखिए मैं बताता हूँ आपको, आई टेल यू। गोल्ड के साथ यूजुअली सारे रिस्की फाइनेंशियल मार्केट्स जो होते हैं, मतलब देर आर टू काइंड्स ऑफ फेजेस इन मार्केट, राइट? वी कॉल वन फेज इज रिस्क ऑन फेज, ठीक है? वन इज रिस्क ऑन फेज एंड द अदर इज रिस्क ऑफ फेज, ठीक है? नाउ व्हाट इज रिस्क ऑन फेज? इट इज अ फेज wherein investors are bullish on stocks, on crypto, ठीक है, ऑन रियल एस्टेट, कोई भी, मतलब जो भी एसेट एप्रिशिएट होता है, ठीक है, बीट्स द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एटलीस्ट, और उस एंड कम्स विद सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्क, ठीक है? तो उनको हम रिस्की एसेट्स कहते हैं, या फिर यू कुड से वैसे एसेट्स पे इन्वेस्टर्स आर बुलिश व्हेन इट्स अ रिस्क ऑन फेस, कि इन्वेस्टर्स का माइंडसेट ऐसा रहता है कि दे आर विलिंग टू टेक रिस्क। बट व्हेन इट कम्स टू अ रिस्क ऑफ फेस, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स एक ऐसा सिचुएशन इन द मार्केट जहां पे पीपल आर मोर टुवर्ड्स बाइंग गोल्ड, बाइंग बॉन्ड्स, ठीक है, बाइंग एफडीज एंड सो ऑन, व्हिच गिव्स यू शेयर शॉर्ट रिटर्न्स एटलीस्ट, ठीक है? तो रिस्क ऑफ फेज इज व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, कि मार्केट में यू कैन सी गोल्ड गोइंग अप,
and the risky markets coming down. So that includes the stock market also, that includes crypto also. हाँ, this is the general case. Yeah, ठीक है. So ये एक जनरल केस है. हमेशा हमेशा काम नहीं करेगा. इन सम केसेस यू विल सी थोड़ा सा डेविएशन, तो वो तो चलो चलता रहेगा. ठीक है. बट आई होप यू अंडरस्टूड राइट व्हाट आई एम सेइंग. तो हाँ, अगर मैं आपको बताऊं तो नैस्डैक और बिटकॉइन काफी हद तक पॉजिटिवली कोरिलेटेड है. बट आई डोंट थिंक द कोरिलेशन फैक्टर विल बी मोर देन 0.5 और 0.6%. अगर आप पूछोगे गोल्ड और ओके सर. हाँ, गोल्ड और क्या कहते हैं क्रिप्टो के बारे में, देन आई विल ऑल्सो अगेन से कि दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, बट उतना हद तक नहीं. ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट. All right. So that is what we call as the relation between different financial markets. Anyways, let's now come back to what we are discussing. So BTC का जो bottom है, that's what we were talking about कि इतना तो खास होगा नहीं. And the second thing is the way market is giving volatile movements on either direction, a lot of retail players will get liquidated and eventually get out of the market. Right. So that's the thing, guys. That's what we were discussing about. So, chalo. Now I would like to hear from you. By the way, there is one coin by the name AIXBT, right? And there was some news that came in, and this coin moved up by nearly. I'm not on the right chart. Yeah, it moved by nearly 50% within no time. So that was also a swift movement in this. Okay. There was someone who was holding this coin with a decent enough loss and a good size, and then she basically made $1,400 out of it. Okay, so that's cool, that's awesome. Uh movements आ जाते हैं ऐसे ऐसे. Not everyone is able to capture it on a daily basis, but हाँ. Now coming to you know trade we can take, right? So जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 0.382 is a good important zone, राइट. 0.382 के आसपास से एक रिवर्सल हमें मिल सकता है. बट इन केस इट ब्रेक्स इट डाउन, तो फिर यहाँ से फिर सीधा 85 87 तक ही जाके रुकेगा. ठीक है. तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट. अगर कोई बाई कर भी रहा है तो उस हिसाब से कर लो कि आप अभी यहाँ पे आधा एंट्री ले लो एंड देन वेट फॉर 85 to 87 to come up, and then you can place in the rest of the entries. Does that work, guys? All right. So, sorry. Today in the morning, how many of you took our buy trade on what do you call uh, on BTC? Okay, and how many of you made profit? So basically, we gave an entry at, if I recall correctly, we gave an entry at 93,500, if I recall, right? And then from there, we have seen it go up to 95,300. That was the first target. But thankfully, that was a target. So I'm not sure how many of you booked it at that level. But the market literally fell down from there, right? चलो, that's great. 92,500 92,500K से लेके what you're saying 100K, huge opportunity. uh yeah, you can say that. अच्छा opportunity तो है. It's a good 10%. Also, guys,
डोंट बी टू बियरिश बिकॉज 20 तारीख को ट्रम्प जी आ रहे हैं, कुछ ऐसा जरूर बोल देंगे जिससे क्रिप्टो भाग जाएगा, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द सेम, राइट? Now I can come to your doubts, right? So Muhammad Ayub is saying, sir, IOST 0.009 आज 11:59 पॉइंट तक जाएगा। आप पूछ रहे कि बता रहे फर्स्ट? Anyways, who else are having doubts, guys? किस किस को डाउट्स है? आप लोग पूछिए। Is there anyone who is having a trade open now? किस किस के ट्रेड्स ओपन है अभी फिलहाल? हाँ ऋषभ, क्या ओपन है? सारे पुराने ट्रेड्स है, उसी को बचा के रखा है, देखते हैं अब, जब तक मार्केट रिवर्सल साइन देगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। लॉन्ग सी है सारे? हाँ हाँ, लॉन्ग सी, कोई शॉर्ट नहीं है फिलहाल, मतलब थोड़ा सा कैपिटल प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखा है मार्केट। अगर एक अपॉर्चुनिटी बनती है तो बाद में फिर ट्रेड्स ले सकते हो, बिकॉज बिकॉज आई फील कि अगर एक बार लिक्विडेट हो गए तो दैट वुड बी अ बिगर लॉस देन मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस मार्केट। तो हाँ, वो थोड़ा लिक्विडेट सा, होने नहीं देना है ना, आप कुछ भी हाँ, ट्रेड सेव करने के लिए थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू में मैनेज कर रहा हूँ फंड्स। बट सही आई है। फील यस, इफ एनीबडी वांट्स टू एंटर, दिस आर गुड प्राइस पॉइंट्स। मतलब मैं अगर शायद स्पॉट में ही एंट्री कर रहा होता तो आई वुड हैव मेड गुड एंट्री पॉइंट्स अराउंड दिस रेंज। दिस इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। और थोड़ा और एडिशनल फंड्स मैंने नीचे के लिए रखा होता, मतलब इफ समवन वांट्स टू एंटर एट 2x 3x लेवरेज, दीज आर पोजिशनल पॉइंट्स, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो विदाउट हाँ, एनी डाउट। दैट वुड बी माय एडवाइस। मतलब सारे ही कॉइन्स काफी अच्छे सपोर्ट जोन पे है। अगर यहाँ से एक और डिप आती है तो दैट वुड बी माइनर करेक्शन ऑफ लाइक 5-7%, मतलब ऑल्ट्स में शायद 10% तक आ जाए, बट नॉट मोर देन दैट आई फील। राइट, सही है। लेट्स सी हाउ दिस गोस। डॉग्स यूएसडीटी लो ब्रेक करेगा का क्या? अगर बिटकॉइन बेरिश होता है तो कर सकता है, बट आज के दिन में डॉग्स यूएसडीटी इज पॉजिटिव, सो चल भी रहा है बहुत नीचे, सो नॉट श्योर बडी क्या होगा। अगर मैं दूसरे नए कॉइन्स का चार्ट को फॉलो करूं तो हाँ ब्रेक करेगा, कह लो आप, ठीक है, बट स्टिल वी आर नॉट श्योर ऑफ दिस, ठीक है। ऑल राइट गाइस, सो या आई एम डन फ्रॉम माई साइड टुडे, ठीक है। सो अ ब्रीफ एनालिसिस, ज्यादा कुछ था नहीं आज मार्केट्स में कवर करने को। अगर हम कोई शॉर्ट कॉल देते सो मेक श्योर यू टेक द ट्रेड, ठीक है। एंड मीनवाइल वी हैव एन एक्सक्लूसिव डिस्कशन पैनल, सो I'm sharing that link with all of you, okay? So just a second guys. So whoever is not a part of this exclusive discussion panel, you can go ahead and log into this, okay? Join this, and then we'll have a lot of discussion over there in terms of what trade to take, what not to, what are the markets doing, okay? Cool guys, so yeah, that's enough for today. We'll keep it small and nice and tight, so that we will be able to focus on what's coming next, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं, इट्स जस्ट दैट इफ बिटकॉइन होल्ड्स अप टू इट्स सपोर्ट तो फिर सही है, अगर नहीं करता है तो फिर गलत है, यू नो। विशाल, जस्ट वन डाउट, आप एक ट्रेंड रिवर्सल किस पॉइंट के बैरियर को ब्रेक होने के बाद देखते हो? मतलब अगर बिटकॉइन को एक्चुअली ट्रेंड रिवर्सल देना है तो हाँ, व्हाट इज योर फर्स्ट प्राइस पॉइंट? मतलब 97 के मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ से वो एकदम स्टीप फॉल दिख रहा है ना, उसके नीचे वाला पॉइंट, वहां पे अगर ब्रेक कर देता है विद गुड वॉल्यूम, आई फील वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप हो सकता है। आप टारगेट पूछ रहे हो या फिर क्या? नहीं नहीं, टारगेट नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो बेरिश ट्रेंड है इसका रिवर्सल आप कहाँ से, बिकॉज इट कुड बी अनदर ट्रैप। जैसे आज दिन भर में चला है, मार्केट ऊपर में गया एंड देन इट केम बैक डाउन, आइडियली इट वांटेड टू गो डाउन बट वो ट्रैप की तरह ऊपर जा रहा था। तो राइट,
हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि टिल व्हाट प्राइस पॉइंट दिस कुड हैपन, मतलब 97 के, विच इज 50% ऑफ द होल फॉल, मतलब जो हाँ 102 से लेके अब तक गिरा है, उसका हाँ, कुछ 50% जोन 97 98 के आसपास आ बिल्कुल रहा हो है। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो वहां तक भी जाके मार्केट फिर से मतलब नीचे आ ही सकती है। हाँ तो वो एक जो क्रिटिकल जोन लग रहा है रेजिस्टेंस, उसके बाद वी कैन बी प्रिटी श्योर कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब वो जोन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अभी तो नीचे इम्पोर्टेंट है, बट ओवरऑल अपसाइड में भी एक वैसा ही जोन बन रहा है या दैट इज रेजिस्टेंस। राइट, दैट इज राइट, वो मैं सही आपके साथ एग्री करता हूँ। ठीक है, बट मुझे जो लगता है ना कि अभी मार्केट थोड़ा सा टाइट कंसोलिडेशन देके रिवर्स करेगा अगर ब्रेक नहीं करता है तो। हाँ हाँ, मतलब देयर वोंट बी अ वी शेप रिकवरी, इट्स इट्स प्रीटी क्लियर कि ऐसा डायरेक्टली नहीं मूव आउट करेगा। इस हाँ जोन में थोड़ा चलेगा, इट विल ऑब्जर्व कि कैसा है, अगर इफ बायर्स टर्न अप देन ऑटोमेटिकली इट विल गिव अ स्टीप प्राइस थोड़ा सा। राइट राइट राइट, या चलो, गुड गुड, लेट्स सी, मतलब हम तो रात में एक्टिव रहते ही है, अभी 4 दिन से वही चल रहा है कि रात में कब कब क्या हो वही जाए बात पता है नहीं। कि एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा रात को, क्योंकि रात में अच्छा वोलेटिलिटी आ रहा है, वैसे भी कल हाँ, परसों तो इट इज सैटरडे संडे, सो लेट्स सी। यस यस, वीकेंड में, और टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम वो शुरू हो जाता है, मतलब इट्स वेरी हाँ डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली, ट्रैक लाइक दिस। एग्जैक्टली। वो एक थोड़ा सा है, ठीक है, लेट्स सी, होपिंग फॉर गुड टाइम। ओवरऑल तो हम अप ट्रेंड में ही है, देयर इज नो साइन ऑफ कि हम नीचे जाएंगे, बेरिश तो नहीं हुए हैं। शॉर्ट शॉर्ट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा लगता है चीजें, बट ओवरऑल तो वी आर एक्सपेक्टिंग गुड। या फॉर गुड श्योर, गुड, गुड गुड, फॉर श्योर। चलो चलो। ठीक है, ग्रेट थैंक ग्रेट यू ग्रेट थैंक यू एनालिसिस। थैंक यू। हाँ हाँ, ये someone is asking something. So, so some view on coin switch scare. Why coin switch need to support WazirX? Coin switch give near 10% deposit and 5% sharing redeem to for WazirX user, but not for coin switch because WazirX खत्म हो चुका है. This is the answer. All right. If you had 1 lakh rupees on WazirX, you won't be able to even withdraw for 50,000 now. So you get the point, right? विशाल, कैन यू चेक बीटीसी डोमिनेंस चार्ट वंस, मतलब एक बार आप बता सकते हो कि वो 59%, मतलब लग रहा है वहां पे जाके ही एक रिवर्सल दे सकता है अभी हाँ तो। ये टेस्ट करने आ रहा है फिर से, हम्म डबल टॉप बना के कुछ कहीं से इट विल हम्म कम डाउन अगेन यहाँ से। हाँ, ये हमने शायद बात भी करा था इसके बारे में, है ना, इफ आई रिकॉल, कि एक बार तो आके हम्म। फिर नीचे आएगा हाँ, ये। एक बार आना चाहिए, उसके बाद ही वो फॉल फिर स्टीप हो सकता है, अदरवाइज इट विल बी, मतलब हमेशा वो एक कंसर्न रहेगा कि प्रॉपरली बिटकॉइन ने रिट्रेसमेंट नहीं दी है डोमिनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। राइट 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 राइट। तो ये तो चलो फुलफिल हो गया। अमन सर को शायद मैं कह रहा था बार बार कि ये होने वाला है। हाँ बट नहीं ठीक है। नहीं, मार्केट मार्केट टेक्निकल्स को ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, फंडामेंटल तो एक ठीक है, न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू अभी सारी बेरिश न्यूज आएंगी, फिर एकदम से सडनली ट्रम्प की पॉलिसीज अच्छी आना स्टार्ट हो जाएंगी, एवरीथिंग विल टर्न अराउंड, मतलब इट्स राइट। जस्ट नॉइज इन द मार्केट। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के फियर और ग्रीड के साथ खेला जाता है, बट हम्म, अगर हम एक्चुअली ट्रेड करना चाहते हैं तो टेक्निकल्स को रेस्पेक्ट करके ट्रेड करेंगे तो वी वुड ऑलवेज बी सेफ, आई फील। फॉर श्योर यार, फॉर श्योर। अगर कंसर्न दिख रहा है चार्ट पे, देन ऑब्वियसली वी शुड मेक श्योर कि वी डोंट इग्नोर दैट। यस हमें यस, मतलब लेवल्स पे हम लोगों को देखना पड़ेगा, मतलब इवन इफ वी आर मेकिंग पोजीशन, तो हम्म, लेवल्स आर वेरी क्रिटिकल, जैसे कोई भी फिबोनाची एक लेवल रहती है। इथीरियम 3740 से ही रिट्रेस हुआ बिकॉज देयर वाज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एट दैट पॉइंट। हाँ तो एक रहता है लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, जैसे आपने पैरेलल चैनल बनाया था बिटकॉइन का, तो उस पैरेलल चैनल के मिड लाइन 102 के आसपास थी, वहीं से वो रिजेक्शन लिया, इट कुडंट क्रॉस अपसाइड, मतलब नेक्स्ट हाँ, टाइम जब जा रहा था। राइट। तो दीज आर सम लेवल्स, दीज आर सम की एरियाज, आई फील जो सबको थोड़ा सा एनालिसिस करके रखना चाहिए।
ट्रेड लेते वक्त भी, बिकॉज फ्यूचर्स में अभी मेरा एक्सपीरियंस तो काफी भयंकर रहा है। लास्ट 1 वीक में काफी कुछ सीखने मिला है, तो ऑल दोस थिंग्स टेकन इनटू कंसिडरेशन, थोड़े टेक्निकल सपोर्ट, रेजिस्टेंस चैनल्स, ये सब अगर हम पता कर ले तो वी कैन ट्रेड सेफर आई फील। मतलब विद गुड लेवरेजेस, मतलब अगर हमारी पोजीशन साइज थोड़ी अच्छी होती है तो कम लेवरेज भी बहुत अच्छा रिटर्न दे देता है मार्केट में। हाँ, दैट इज वन थिंग राइट। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, ठीक है, हम्म। देन आप लेवरेज कम ले रहे हो, देन ऑब्वियसली यू आर एट अ लेसर रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू मार्केट रिस्क। करेक्ट मतलब करेक्ट। हाँ, लेवरेज जितना ज्यादा लोगे आप उतना ज्यादा रिस्क में फंसोगे। और जेन्युइनली सेइंग, 1-2 लाख रुपए से बंदा अच्छा ट्रेड कर सकता है क्रिप्टो में। बहुत बहुत, मतलब मैंने जेन्युइनली अपना खुद का ट्रेड सेटअप देखा कि आई स्टार्टेड विद लाइक 60-50 थाउजेंड, एंड देन अभी मेरे पास सिर्फ पोजीशंस बचाने के लिए 2.5 लाख रुपए चले गए मार्केट में। सो इफ आई वुड हैव डन इट विद अ लेसर लेवरेज तो प्रोबेबली इतने इसमें तो मैंने ज्यादा कैपिटल बना लिया होता, इंस्टेड ऑफ सेविंग द लिक्विडिटी ऑलवेज। राइट। तो this is my learning, मतलब 3x max 5x is a good, unless you are scalping तो लेवरेज बड़ा होना ही नहीं चाहिए। दैट्स माय लर्निंग ओवर दिस। और अगर स्टॉप लॉस हो, मतलब आप प्रॉफिट में हो, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ट्रेड्स कैन नॉट बी इन्वेस्टमेंट्स। दिस इज वन पॉइंट ऑफ व्यू। एक ट्रेड में आप 6 महीना तो लेके नहीं ट्रेड बैठ सकते हो। देर विल बी मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज, अप्स एंड डाउन्स, रादर देन वन बिग मूव ऐसा। सही बात है। अब विशाल, अब जैसे यहाँ पे ऋषभ का ये वाला पॉइंट सही था कि ट्रेड में आप लेके नहीं बैठ सकते हो। अब मैंने अक्टूबर से जैसे पोजीशंस जो बनाए हुए थे, तो अक्टूबर नवंबर में मेरे जो पोजीशंस थे वो मैंने पोजीशनल बनाए थे मतलब फ्यूचर्स में। तो मैंने उस समय ये सोचा था कि जैसे 3x 4x में ऑल्ट्स उठाऊंगा, और मैंने कैपिटल कुछ साइड रखा हुआ था ताकि इन केस अगर मार्जिन ऐड करना पड़े, क्योंकि एक बॉटम से उठाने से ये फायदा हो जाता है कि थोड़ा सा वो लेवरेज आप हल्का सा हाई कर सकते हो। तो बीच में अब जैसे टूटा भी तो मेरा कैपिटल अभी तक तो मतलब सारा सौदा बचा लिया, ऐसा कोई लिक्विडेशन का इशू नहीं हुआ है सच। अब यहाँ पे और मतलब कितना, अब जैसे बीटीसी डोमिनेंस क्या है, राइज कर रहा है और बीटीसी फॉल कर रहा है, तो ये ऑल्ट्स का और बैंड बजा हुआ है। तो अभी मैंने जैसे विपुल से भी थोड़ा देर पहले वही बात किया था कि यहाँ पे क्या एक बॉटम देखते हो ऑल्ट्स के लिए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे अब यूएस मार्केट आज गिरा हुआ है तो रात तक पता नहीं और कितना तोड़ेगा बीटीसी और ये वाले चीज को। मुझे तो तो लगता है जब तक गिरेगा। डोमिनेंस नहीं गिरेगा। हाँ मुझे तो लगता है गिरेगा। मैं सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, लाइक द वे हाँ यूएस हाँ, का। वही 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 मतलब वही बोल रहा हूँ कि गिरेगा। वही चीज के लिए बोल रहा हूँ कि अभी तो मतलब बाजार और गिरना है चाहिए मतलब हिसाब से, लेकिन पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से एक ट्रेंड देखा था, आज वो हल्का सा चेंज इसलिए लग रहा है कि यूएस और डाउजन और नास्डक काफी गिरा हुआ है, पर हाँ बीटीसी और ये सब सारे होल्ड किए गए। मतलब वैसा पहले जैसे क्या होता था कि 3 दिन में एक चीज नोटिस करना कि डाउ जोन्स और नास्डक गिरा नहीं था, लेकिन इन लोग को गिराया है। हाँ, अभी ये चीज नहीं दिख रहा है। इट इज होल्डिंग अप टू इट्स लेवल। ये लेकिन एक चीज है कि आज इतना गिरने के बाद भी इन लोग हाँ अपना लेवल्स होल्ड किए हुए हैं। मतलब ऐसे कुछ खास गिर के एक बार गिरा फिर वापस से रिकवर कर गया, मतलब वैसे कुछ खास गिरावट नहीं आया है सुबह के प्राइस से देखा जाए तो। हाँ, तो राइट। और दो नैस्डैक भी चीज अभी हो रिकवर। सकता है कि दो केस यहाँ पे यही बन सकता है कि क्या पता मतलब होल्ड कर ले और ऊपर भाग जाए, और या तो अभी और फॉल आना बाकी है। हम्म। हाँ, ये तो अभी अभी इट विल टेक टाइम फॉर अस टू डिसाइड क्या करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। करेक्ट। हम्म। ठीक है, कूल। लेट्स सी गाइस, बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट्स इन द मार्केट हम लोग सिग्नल्स शेयर कर देंगे, और उस बेसिस पे आप लोग पोजीशंस ले लेना। ऑफ कोर्स अभी थोड़ा सा रिस्की टाइम है, तो पोजीशन साइज थोड़ा सा कम रखना इफ यू आर फॉलोइंग एनी ट्रेड फ्रॉम आवर साइड। और बाकी तो चलो, इट इज गुड, नो वरीज। ठीक है। विशाल, ये डेटा आज का पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव है? क्योंकि मतलब फोरकास्ट के हिसाब से डेटा लग तो ठीक रहा है, लेकिन अब मार्केट का इफेक्ट तो इसमें नेगेटिव दिखाया है, मतलब डाउजन के लिए। तो आज मैंने का एक्चुअली डेटा। देखा मैंने देखा ही नहीं। मैं आई वाज एक्चुअली बिजी। सो ओके। हाँ, आप एक बार बता दो ओवरऑल क्या था ओवरऑल ये।
over जैसे there. यूएस नॉन फार्म पेरोल का जो डेटा था हाँ, उसमें कुछ 166,000 एक्सपेक्टेड था और 256 एक्चुअल है। और तुम्हारा बाकी का जो डेटा है ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब कुछ खास उसमें नहीं है। okay. मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेड से खराब है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। तो सो फिर आई थिंक रिकवर कर लेना चाहिए, फिर मार्केट्स को देखते हैं। इनफैक्ट अभी रिकवर हो भी रहा है धीरे धीरे फ्रॉम द बॉटम। लेट्स सी, रात तक पता लग जाएगा क्या होता है। ऑलमोस्ट 1% रिकवर हो चुका है नैस्डैक, है ना। वेट एंड वॉच है बस, क्योंकि दैट्स ऑल बीटीसी भी वी कैन वापस से से। 94,000 आ गया। अब यहाँ पे डाइसी ये लग रहा है ना, क्योंकि डाउजन वाउजन जब इतना गिरता है ना तो बीटीसी का इफेक्ट 8 बजे से ही चालू हो जाता है। इतने दिन से देख रहा हूँ कि 9:30-10 बजे तक तो तोड़ ताड़ के बैठा देते हैं पूरे बीटीसी को। हाँ बट हाँ, बीटीसी समहाउ और सब कुछ होल्ड किया हुआ है पोजीशन, राइट। वापस से 94K में जा चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से अगर एकदम ऊपर चल जाएगा, अब यहाँ पे कोई पोजीशन बनाना या शॉर्ट करना या काटना बहुत मतलब डाइसी है। ये बहुत ऊपर नीचे कर रहा है ये। हर मुझे ऐसा बार लगता बोलिए। है हम पहले मतलब क्रिप्टो मार्केट पहले फैक्टर इन करने कर लेता है ये सारी न्यूज और सेंटिमेंट्स को। इफ हाँ समथिंग इज क्या पता बेरिश, 3 दिन से जो गिरा है फैक्टर इन हो चुका हाँ है हो प्राइस चुका पर सब होगा। कुछ। वी नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। मतलब बड़े प्लेयर्स की सोच हमारे से तो बहुत ही डिफरेंट होती है। करेक्ट तो करेक्ट। और इंटरेस्टिंग चीज ये था ना कि 3 दिन से यूएस का मैं फॉलो कर रहा था, बाजार डाउजोन हिला भी नहीं है, डाउजोन और नास्डैक, लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो का बैंड बजाया था हाँ ट्यूसडे तो के बाद से। and there is no major news that is actually pulling करेक्ट। this down। मतलब यूएस स्टॉक मार्केट एक जनरल टेंडेंसी रहेगी, कोई भी मार्केट में 1-2% नीचे गिरता है, दैट इज फाइन। बट ऐसा कुछ बेरिश सेटअप नहीं बन रहा है। दे आर बेयरिश जस्ट सेटअप ट्राइंग नहीं टू। बना, और मेन बात है कि जितना रिट्रेसमेंट ऑलरेडी आ चुका है हाई से, ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट गिरा नहीं है। हाँ आज मतलब जितना 1 लाख ऑलरेडी अगर रिट्रेसमेंट 8 आ से चुका है देखोगे अब। तो इट्स अ गुड हाँ, रिट्रेसमेंट। मतलब 40-50% का ऑल्ट मार्केट कैप में रिट्रेसमेंट आ चुका है, अगर इथेरियम और ये सब हटा दे। और सोलाना ये सब में भी 30-35%, ईथ में 30% के 25% के आसपास रिट्रेसमेंट ऑलरेडी दिख चुका है। 4100 से 3100 लो लगाया था इसने। तो हाँ वो अब उसके बाद वो तो ऑलरेडी जो भी नेगेटिव न्यूज था, तो स्टॉक्स में भी जब इफेक्ट आता है तो वहां से बाजार थोड़ी है कि 50-60% गिर जाता है। यूएस में जो स्टॉक मार्केट है 5% 6% रिट्रेस करेगा, जो कि डाउजोन ऑलरेडी कर चुका है और नास्डैक ऑलरेडी कर चुका है, 5-6% 7% डाउन हो चुका है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे है। मतलब एक दो दिन क्रूशियल रहेगा। मार्केट कभी मेन भी बात है कि एक सैटरडे संडे वीकली। तो साला मूव आता नहीं है, अब जो होगा मंडे को ही होगा। नहीं नहीं, आज का तो पूरा ट्रेडिंग डे बचा है ना, हाँ, आज तो आज कुछ का भी हो बचा हुआ सकता है। है। आज रात में कुछ भी हो सकता है, तो बस देखते हैं फिर। वो लो वॉल्यूम्स पे तो क्या ही होगा, मतलब प्राइस में बायर्स नहीं रहेंगे, दैट वुड बी द ओनली रीजन मार्केट विल ट्राई टू गो लोअर। बट अगर पता नहीं, लेकिन बायर्स है। सैटरडे संडे मैंने मतलब इतने 3 महीने से देखा है कि वैसा कोई खास मेजर मूवमेंट तो आता नहीं है जनरली। नहीं मतलब नहीं, वो आएगा तो अप संडे साइड के नाइट में लिए भले ही स्टार्ट आ हो सकता जाता है। है। इफ देयर इज समथिंग, संडे नाइट को ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब बिफोर हाँ। वहां पे कुछ होगा। ठीक है, लेट्स सी। मतलब दो ओके। दिन थोड़ा आराम से करते रहते हैं। वंस डायरेक्शन इज क्लियर वी कैन टेक ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। दैट्स। ठीक है। सो चलो कूल गाइस, चलो। आई थिंक एनफ फॉर टुडे, है ना। वी विल वाइंड अप। ठीक है, थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है आज। वी विल अगेन कनेक्ट टुमारो। सो वी डिड थ्री थिंग्स बेस्ड ऑन फिबोनाची, बेस्ड ऑन ग्लोबल मार्केट, जो ऋषभ और अमन सर ने एक्सप्लेन करा, एंड देन ऑफ कोर्स मल्टीपल अदर फैक्टर्स जो अभी देख रहा हूं। ओके, सो विद दैट वी विल क्लोज टुडेस सेशन। ठीक है, we'll again connect tomorrow at the same time, or let's see what we have in the markets, for us. Okay guys, so thank you so much everyone. See you tomorrow. Goodbye, good night, have a nice day. All right. थैंक यू, गुड नाइट। Hope everything green.